Welcome back students. In this video we will be seeing the life cycle of a frog. हम मेंढक की life cycle देखेंगे. So a frog, it lays number of eggs in water. A frog lays plenty of eggs in water, and these eggs they appear as a cluster of jelly like substance. वो हमें एक jelly like substance के cluster की तरह दिखता है, to which we call spawn. This cluster of eggs is known as spawn in case of frog. Now, inside these eggs will be the embryos. Embryos of whom? Embryos of the frog. Now, after this embryos are well incubated, after they get the warmness for incubation, these eggs will hatch and the offspring of the frog will come out. The offspring of frog is known as tadpole. Like the offspring of a cat is known as kitten, the offspring of a bird is known as chick, the offspring of a dog is known as pup. Similarly, the offspring of a frog is known as tadpole. So once their eggs get hatched after incubation, tadpoles come out of the eggs. Now, how do their eggs get incubated? From where they get the warmness? The eggs are present inside the water. So, they get their warmness for incubation from the sun rays. Sun rays give them the warmness required for incubation. And after incubation, these eggs hatch into tadpoles. Now, these tadpoles, they look completely different from the adult frog or the parent frog. ये जो tadpoles होते हैं, मेंढक के बच्चे जो कि अंडों से निकलते हैं, ये अपने पेरेंट फ्रॉग से बिल्कुल अलग दिखते हैं. दे लुक लाइक फिश क्योंकि इनकी टेल्स होती है. कैन यू सी दिस टेल्स? दिस इज द टेल, दिस इज द टेल. सो द tadpole, it looks completely different from the parent frog. It looks somewhat like a fish and it has tail. अब जब ये tadpole धीरे धीरे ग्रो करेगा, इसकी जो टेल है वो छोटी होती जाएगी और फाइनली जब ये अपने एडल्ट फ्रॉग की तरह शेप अप होगा या डेवलप होगा, तब इसकी टेल खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी. दिस इज वन थिंग. नाउ इन सच केसेस, लाइक इन केस ऑफ फ्रॉग, जहां पे किसी एनिमल का ऑफस्प्रिंग, बच्चा, पेरेंट से कंप्लीटली डिफरेंट दिखता है, इट लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट एनिमल, उस केस में जो भी चेंजेस आते हैं उसके ऑफस्प्रिंग में धीरे धीरे व्हाइल इट्स ग्रोइंग, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिससे कि फाइनली वो अपने एडल्ट पेरेंट की तरह दिखता है और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स एडल्ट पेरेंट, इट लुक्स लाइक इट्स एडल्ट पेरेंट, उस चेंजेस को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. व्हाट वी कॉल इट? मेटामॉर्फोसिस. Spelling is METAMORPHOSIS and it is pronounced as metamorphosis. So metamorphosis takes place in which case? In which the offspring is completely different from the parent. In that case, the offspring undergoes metamorphosis to develop into its adult. तो इस केस में भी टैडपोल क्या करेगा? मेटामॉर्फोसिस अंडरगो करेगा. पूरा मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होगा जिसकी वजह से ये अपने एडल्ट फ्रॉग जैसा चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. राइट नाउ इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. नाउ इट विल ग्रो एंड ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ changes will take place, transformation will take place, and because of that transformation, this tadpole will finally look like its parent, and this is known as metamorphosis, the process in which changes takes place in such a way so that the offspring, which was completely different from the parent, finally looks like its adult parent. So this was the life cycle of a frog. So frog, it lays number of eggs in water, and these eggs, they appear as a cluster of jelly like substance which we call it spawn. Right? Now after incubation, the warmness for incubation, these eggs get from the sun rays. So after incubation,
incubation, the eggs hatches and tadpoles come out. Young ones of the frog are known as tadpoles. Now these tadpoles are completely different from their parent frog. They actually somewhat look like a fish. They has a tail, and when it grows, the tail becomes smaller and smaller, and finally when it changes or transforms into adult frog, the tail disappears. And this tadpole undergoes the process of metamorphosis in such a way that it transforms into the adult frog. So metamorphosis, it takes place in which case where the offspring, जहाँ पे बच्चा अपने पेरेंट से completely different दिखता है, उस केस में जो बच्चा है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो मेटामॉर्फोसिस उसमें होता है. मतलब ऐसे चेंजेस होते जाते हैं उसके ग्रोथ के दौरान कि फाइनली जो एकदम अलग दिख रहा था बच्चा, वो फाइनली अपने पेरेंट की तरह पूरी तरह ग्रो करता है, पूरी तरह दिखने लगता है. नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश. फिश ऑल्सो इट लेज प्लेंटी नंबर ऑफ एग्स इन वाटर, एंड ये जो सारे एग्स होते हैं फिश के, दैट डज नॉट डेवलप इनटू बेबी फिश. फिश इट लेज plenty of eggs at once in water, but out of these plenty number of eggs, only few eggs develop into baby fish. Reason? Most of the eggs of the fish, they are eaten by the bigger fish or other animals. बड़ी मछलियां या दूसरे जानवर मछली के आधे अंडे खा जाते हैं, तो जो बच जाते हैं अंडे, that develops into baby fish. And in case of fishes also, their eggs get the incubation warmness from the sun rays. So that's all for today. In the next week, we'll see the life cycle of grasshopper, cockroach-like insects. Till then, stay happy, stay fit and fine. Bye-bye.